देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि वो डज नॉट बेयर द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फेलोसफी। तो लोकायत और कपालिका, ये क्या है ना कि लोकायत और कपालिका ये सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी का है। द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऑल्सो इसको वेदांता कहा जाता है। ईच ऑफ द सिस्टम रेफर डिफरेंस इन वन वे एंड अदर फेनोमेनल लॉ एंड डोगमास। न्याय क्या करता है? द फाउंडर ऑफ न्याय सिस्टम फिलोसफी गौतम। द कैटेगरी ऑफ हस्तिका दर्शन। वैशेषिक क्या है कि द फाउंडर ऑफ वैशेषिक सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी कन्नड़ और उल्लूका। इसको क्या कहा जाता है? तो अलुकेआय कहा जाता है। संख्य क्या है? द सेज कपिला फाउंडेड द संख्य सिस्टम फिलोसफी एंड इन फैक्ट्स इट इज सेड टू द संख्य सिस्टम लेड द फर्म फाउंडेशन। For the Advaita Vedanta later on. योगा क्या है? फिलोसफी वाज पतंजलि एंड योग सूत्र और द एफोरिज्म ऑफ योगा। पूर्व मीमांसा क्या है कि पूर्व मीमांसा वाज फाउंड बाय द जैमिनी एंड मीमांसा दर्शन बिलीव्ड परफॉर्मेंस और रिचुअल सपोर्ट्स द व्यू ऑफ द पेरिसेबल्स soul survive the death. उत्तर मीमांसा the philosophy Uttar Mimamsa does not a specific founder since it is the conglomeration of three different schools of thought, namely Advaita, Visishta and Dvaitva. The philosophical system of Uttar Mimamsa is otherwise called Vedanta, and all the three schools of Vedanta have different teachers. Adi Shankara is the head of all Advaita system of Vedanta philosophy. Ramanujam is the architecture of Visishta Dvaita and Vedanta. Madhva is the head of Dvaita and Kapila. The term Lokayat and Karvaka, the historian, has denoted Bhadrachalam, Chanderi town. तो फेमस प्रोडक्शन ऑफ चंदेरी एंड कांचीपुरम. चंदेरी इज नोन प्लेस इन अशोक नगर ऑफ मध्य प्रदेश, फेमस फॉर हैंड वूवन साड़ी. इट इज ए रिनोड साड़ी ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज. द प्रोडक्शन ऑफ चंदेरी हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय इंडिया एज GI टैग, मतलब जोग्राफिकल. Kanchipuram is an Indian state of Tamil Nadu. City of well known for its hand woven silk sari. Most of the city workforce is involved in the weaving industry. Kanchipuram sari received geographical indication mark. कांचीपुरम को 2005 में मिला है. The first product in India to receive this tag, Bhadrachalam in Telangana, is a famous temple of Lord Rama, and Karnal is a famous industry, shoes, NDRI and agriculture. C. Gujarat, Kannada, Telugu. Which of the following declared classical language? कन्नड़ एंड तेलुगु. ये है टिल नाउ. अभी जब है ना गुजरात, अभी तक 2014 तक तो गुजराती और शायद अभी भी है नहीं भी क्लासिकल लैंग्वेज में. इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट लैंग्वेज दैट मीट सर्टेन रिक्वायर्ड टू अकॉर्डिंग द लैंग्वेज दस डिक्लेयर. तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में. And the news was appeared in Hindu and Uriya became the sixth language to be classical language state. एक चैप्टर 12 है नितिन सिंघानिया का, वो करना पड़ेगा. क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है.
सात्रिया डांस, सत्रिया इज ए कम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक ये क्या है? सत्रिया असम का है। इट इज ए सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविस्ट ऑफ असम. It is based on classical rages and talas, devotional song composed by Tulsidas, Kabir and Mirabai. Satriya dance was introduced 15th century by great Vaishnav Sant and reformer of Shankar Deva as a powerful medium for the propagation of Vaishnav faith. The new Vaishnav treasure of Asamiya dance and drama has been for centuries nurtured and preserved with great commitment by the Satraj. The Vaishnav myths and of monastery because of the religious character. Satraj dance style adapted by name. The dance was created by the Ankiya Nat. Is a form of Asami one act and Shankar Deva, Kabir, Mirabai, Tulsidas were born around the start of 16th century. ये 15वीं सदी में है और ये जो है कबीर मीराबाई ये सब 16th सेंचुरी के हैं. तो ऐसे भी हम ऑप्शन एलिमिनेट. विद द रिफरेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, फेमस वर्क ऑफ ए ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाणा विथ न्यूमरस celestial musician above the sorrow figure of each follower. अजंता, इसका क्या होगा? 1 and 3, मतलब अजंता वाला सही है और ममल्लापुरम. द ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाणा विथ न्यूमरस सेलेसियल म्यूजिशियन अबव द सॉरोफुल फिगर ऑफ हिज अजंता में है. और अर्जुना पेनांस डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर टू द सरफेस ऑफ ए ममल्लापुरम. ठीक है. महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन केव 17, numerous celestial musician above and the follower below is one of the grandest and delicately expressive scene ever made in a stone of Ajanta cave. The graving figure of Ananda near his feet is an exceptionally fine and thoughtful representation. Pair 2 is incorrect because rock cut sculpture of Vada is at the Udaygiri near Vidisha, whereas Mount Abu known as Jain temple. Arjuna Penance is a massive open-air bas relief monolith due back 7th century. It is situated in the Mahabalipuram distance of 58 km Chennai and capital of Tamil Nadu. Standing tall at the height of 43 feet, Mamallapuram monolith was carved on the face of a huge adjoining boulder somewhere the mid 7th century. The length of Arjuna's penance is 96. Monolith is also known as descent of Ganga. ठीक है. With reference to India culture, Kalaripattu, it is an ancient martial art of South India. ठीक है ना. मतलब मार्शल आर्ट से भी कलारीपट्टू क्या है? तो ये क्या है कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म है साउथ इंडिया का, जिसमें क्या करता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस. इट इज़ नाउ प्रैक्टिस्ड इन केरला, contiguous part of Tamil Nadu and Malayali community of Malaysia. It was originally practiced in northern and central part of Kerala and Tulu Nadu region of Karnataka. Kalaripattu include strike, kicks, grappling, present form of weaponry and healing method. Regional variants are classified according to geographical position of Kerala. These are the northern style from Malabar region in the south, north Kerala, the central style from near
Inner Kerala and southern style of Travancore region of South Kerala. The southern Payattu system is now extinct, and the Tamil style of Adi Murai is classified at the southern Kalaripattu. Which of the following correctly? 1 and 3 गरबा गुजरात और मोहिनीअट्टम केरला में, तो उड़ीसा गलत है, यक्षगान है। लोक नृत्य भी करना, उसका चैप्टर 6 करेंगे तो हो जाएगा। गरबा क्या है? तो फॉर्म ऑफ डांस है, ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया, ट्रेडिशनली इन 9 डे हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि। मोहिनीअट्टम क्या है? तो एक क्लासिकल डांस है केरला का, 8 इंडियन क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकादमी। यक्षगान इज ए थिएटर dialogue costume made to say unique style and they resembling western opera. It is found in coastal district, ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मेलेनाडु रीजन जो है वो कर्नाटका स्टेट है। उड़ीसा जो है ओडिसी डांस है, वो क्लासिकल डांस है उड़ीसा का। एंड ओरिजिन ऑफ, अच्छा आई थिंक ये तो कब का क्वेश्चन बना रहा है, 2014 का। बाद में एक डायनेस्टी वाला मोनेस्ट्री उधर पूछा है तो इधर भी पूछा है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। बुद्धिस्ट हिस्ट्री एंड कल्चर, तबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली में है, एंड लोहा नाको अलची कॉम्प्लेक्स लद्दाख में। तबो मोनेस्ट्री is located in तबो डायनेस्टी जो है मोनेस्ट्री है, ये टागो विलेज ऑफ स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में। इट इज फाउंडेड इन 996 रिंचन जांगपो द किंग ऑफ वेस्टर्न हिमालय किंगडम। इट इज नोटेड टू बी ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग बुद्धिस्ट इनक्लेव इन बोथ इंडिया and the Himalaya. Alchi Monastery of Alchi Gompa is a Buddhist monastery known more monastic complex in Delhi of Alchi village and Leh district of Indian state under the Ladakh Autonomous Hill Development Council of Jammu Kashmir. Lahotsav Lakhan Temple Nako is not in Jastar near Kinnaur of Himachal Pradesh. A community of Mangniyars well known for their musical tradition in India. West Manganiyar is related Langha caste are Muslim community in the desert of Rajasthan. India is in the district of Barmer and Jaisalmer along the border with Pakistan. Are found in district of Tawarkar and Sanghar and province. They are famous for the classical folk music and their group of hereditary professional musicians whose music have been supported by wealth landlord and aristocrats for generations. A community of people called Manganiyars well known for their musical tradition in northwest India. Musical tradition in northwest India. ये क्या है, चैप्टर 5 तो उसका कर लेंगे तो म्यूजिक वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि पंचायतन क्या है? तो ए स्टाइल ऑफ टेम्पर कंस्ट्रक्शन
A Hindu temple of Panchatayan is one of the main shrine of 4 subsidiary shrine. Its original name comes from Sanskrit word panch means 5 and yatna means god. Generally, the Hindu temple along for the 4 subsidiary shrine are at north, east, southwest. Famous temples are the Lakshman Temple in Khajuraho, Lingaraj Temple in Bhubaneswar, Dasavatar Temple in Devghar, UP. चैत्र 1 इज नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑफ शक इरा तो ये कब से होता है, तो 22 मार्च से होता है, ठीक है। द शक इरा एंड चैत्र द नेशनल कैलेंडर बेस्ड शक इरा विथ चैत्र इज फर्स्ट मंथ ऑफ नॉर्मल 65 ईयर एडप्टेड 22 मार्च 1957. नेशनल हैव ए परमानेंट correspondent of Gregorian calendar. चैत्र 22 मार्च, चैत्र में बैसाख जेठ आषाढ़ सावन बांधे समय. अब ये कंप्लीट हो गया. अगला है 2013. वो 14 वाला था ना, 2014 का था ये, अब है 13 का. एक मिनट, कैलेंडर से भी क्वेश्चन Which of the following describe the best nirvana in Buddhism? The extinction of flame of desire. Nirvana, the extinction of flame of desire. The nirvana is an ancient term used in describe the profound peace of mind. It is acquired with moksha, liberation. The word literally means blow out is a candle and the refer Buddhist context and imperturbable stillness of mind and fire of desire, aversion and delusion. Some Buddhist rock के चैत्य while other at विहार. What is difference? तो चैत्य क्या था? पूजा था, स्थल था, और विहार रहने का is a place of worship, and while विहार is the dwelling place of monks. Chat is a Buddhist scene including a stupa, modern text architecture, and denote the prayer hall, and Bihar is the Sanskrit originally meant scheduled place to invoke and warding during the rainy season. Indian rock cut at Ellora caves was made from different faiths. Barabar caves are the oldest surviving rock cut cave, the mostly dating from the Maurya period, with some Asoka located in Jahanabad district and 24 km north of Gaya. These rock cut chambers date back to the 3rd century BC. According to the ritual, most of the crafting and Ajanta refers to the various religious and Hindus and Lord Gautam Buddha. In the context of cultural history of India, a pose in dance and dramatics called Tribhang, a favorite of Indian artist, is yet which of the following? Tribhang, one leg is bent and other slightly to waist and neck. Tribhang is a tri-bent pose, standing body stance, and Indian sculpture art form Odissi as compared with the contrapposto pose. Tribhang literally meaning the three-part
Three-part breaks consist three bends with neck, waist, and knees. Hence, the body is completely curved at wrist and neck, which is a gentle shape, and considered the powerful, sensual Hindu deity Krishna. B. Ajanta Cave of Lepakshi Temple, also known as mural painting. Mural is a painting applied to made integral with surface, wall, and ceiling. The term including painting does not mosaic direction and mosaic parts of overall. Ajanta Cave, famous for its murals, finest serving example of Indian arts, particularly painting Ajanta murals, a sculpture of animals guard. It also includes scenes of Lord Buddha. Lepakshi Temple is the finest Vijayanagar Sanchi Stup, the famous architecture murals of Sanchi Stup. Dadu Dayal, Guru Nanak and Tyagaraja. Breaching of Lodi dynasty fell and Babur took over. Dadu Dayal Sant from Gujarat, Guru Nanak, founder of Sikh Guru, and Tyagaraja was one of the greatest composers of Indian music.